Good afternoon, everyone. My name is Neetu Jamwal, Assistant Professor of Pharmacy Department. Today's topic is hyperlipidemia. What is hyperlipidemia? Hyperlipidemia is the high concentration of lipids in our blood. So generally we have to know about that how many types of lipids are present in our body and how many types of lipids which we can take from our diet. So generally lipids जो है वो तीन टाइप के होते हैं, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स एंड फॉस्फोलिपिड्स. तो जनरली लिपिड्स जो हैं दे आर हाईली टॉक्सिक इन नेचर, सो दे आर नॉट एबल टू मूव फ्रीली इन द ब्लड. तो लिपिड्स जो है वो हमेशा ट्रांसपोर्ट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ लिपोप्रोटीन्स. लिपोप्रोटीन्स क्या है? एक बैरियर है और उसके अंदर हमारे लिपिड्स जो है वो रहते हैं. कोर में रहते हैं ट्राइग्लिसराइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल एस्टर, और जो इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में रहते हैं वो होता है फ्री कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स एंड एपोप्रोटीन. Now we have to know about what is apoprotein. So apoproteins are those proteins which are used to form lipoproteins. Apoproteins मिलके क्या बनाती हैं? Lipoproteins बनाती हैं. तो जो lipoproteins हैं they are of 5 types which is present in our body. Lipoproteins, first is chylomicrons, second one is very low density lipoproteins, third one is intermediate density lipoproteins, and fourth one is low density lipoproteins, and last one is high density lipoproteins, which is also known as good cholesterol. And different lipoproteins have different apoproteins. So first we start about what is lipid transport. So lipid transport होता क्या है? जब हम कोई डाइट ले रहे हैं, ठीक है, हमारी डाइट में क्या है, हमारी डाइट में क्या होगा कि बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल आते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स आते हैं, फॉस्फोलिपिड्स आते हैं, और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके हमारी डाइट में से ट्राइग्लिसराइड्स का ब्रेकडाउन होता है, फ्री फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स. तो ये सारी चीज़ें मिलके क्या करती हैं? मिक्स हो जाती हैं, मिसल फॉर्मेशन होता है, एंड ये मिसल फॉर्मेशन अब ट्रांसपोर्ट होगा ट्रांसपोर्टर के थ्रू, और ये ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है हमारी एंटीरोसाइट्स जो हमारे इंटेस्टाइन की सेल्स हैं. तो वहाँ पे जाके हमारा फर्स्ट जो हमारा लिपोप्रोटीन है काइलोमाइक्रॉन, उसकी फॉर्मेशन होगी. देन दिस काइलोमाइक्रॉन मूव्स टूवर्ड्स लिम्फेटिक सिस्टम, एंड लिम्फेटिक सिस्टम से इसको इसका एपोप्रोटीन मिलेगा विच इज नोन एज एपोप्रोटीन B48. Then this chylomicron moves towards blood circulation, and in blood circulation there is a vascular endothelial cells layer from where lipoprotein lipase enzyme breaks down triglycerides into free fatty acids and glycerol. Free fatty acids get deposited in tissues, skeletal muscle tissues, smooth muscle tissues, and glycerol is again traveling in blood circulation to form a new triglyceride. Then this chylomicron has a high concentration of triglycerides, okay, and then from chylomicrons, after the breakdown of triglycerides, chylomicron remnant is formed, and this chylomicron remnant is recognized by the apoprotein receptors which is present on the surface of liver, and those receptors take the reuptake of these chylomicron remnants and store the cholesterol inside the liver. Now, what is the function of cholesterol? Cholesterol, which is stored in liver through our diet, then its main function is bile formation. Second function is to make a VLDL. Okay, then VLDL has also a triglyceride level is very high, and then triglycerides again break down into free fatty acid and glycerol. Then from very low density lipoprotein, intermediate density lipoproteins are formed. Intermediate density lipoprotein has a high concentration of cholesterol. Then from there, LDL is formed. LDL is the bad cholesterol which has a high concentration of cholesterol, and low density lipoproteins send these excess amount of cholesterol in different organs to perform different functions. For example, for the formation of cell membrane, for the formation of new hormones and vitamins. Then from this LDL, apoprotein C is donated to HDL. Now, what is the function of HDL, which is the good cholesterol? Its main function is to maintain the cholesterol in our body. So it performs reverse cholesterol transport and take the all cholesterol, excessive cholesterol, which is stored in our organs, and send it to the liver for storage. So that's all about lipid transport, and whenever there is excess amount of LDL in our blood, it will make clot formation and thrombus formation, which leads to the hyperlipidemia. Thank you so much.